हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी परेशानियां अल्ट्रासाउंड में हमारे सामने आ जाती हैं जिनका कोई बहुत सीधा आंसर या कोई बहुत सीधा एक सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं होता है। राइट। सो दिस इज द सेकंड केस दैट आई रियली एनकाउंटर्ड, और मैंने इसकी वीडियो पहले भी डाली हुई है, बट प्रॉब्ली आई एम रियली intrigued by the whole situation in this scenario, so I'm putting this video once again. Right. ये फीटल एब्डोमेन है और ये वर्लपूल साइन है। इसको देखिए, ये बीच में गट है, इसको मिडगट वॉल्वुलस बोलते हैं। ये ब्लैडर है, पेशाब की थैली है। व्हेन वी आर पुटिंग द कलर, वो कलर नहीं आ रहा है इसमें, तो ये स्कीमिया बता रहा है। ये वर्लपूल साइन, मिडगट वॉल्वुलस। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो एक मिजेंट्री के थ्रू असेंबली भी होती हैं, वो फैन आउट करती हैं और उसी मिजेंट्री के थ्रू ब्लड वेसल्स जाती है। राइट। और इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है व्हेन द फीटस इन द मदर्स वूम, और उस दौरान में वो जो मिजेंट्री है और जो आते हैं, जो इंटेस्टाइन्स है, उनका एक टिपिकल सा एक मूवमेंट होता है, एक रोटेशन होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो चलती है। इसमें कई कभी कभी मुश्किल आ जाती है दैट वी कैन हैव ए मैल रोटेशन, एट्री वीनस मैलफॉर्मेशन हो सकती है। जो मिजेंट्री के अंदर ब्लड ब्लड फ्लो होती है उसकी भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। गट्स जो होती है वो मैल रोटेटेड भी हो सकती हैं। तो वो किस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं? तो वन ऑफ द वेज दैट दे कैन प्रेजेंट वाज अ दिस मिडगट वॉल्वुलस। राइट। मिडगट वॉल्वुलस में ये होता है कि वो एक गांठ बन जाती है। राइट। सो मीनिंग देयर बाय कि जो अंदर की फिगर ऑफ एट हो जाता है, और जो गांठें जो जो सम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स गेट्स इनटू द अदर वन, और उसके चारों तरफ वो गर्दन की तरफ जैसे हम कॉर्ड लगाते हैं तो उस तरह से बन जाती है। तो दिस बिकम्स अ वर्लपूल साइन। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, कि वो वर्लपूल साइन बनने की वजह से जो ब्लड वेसल्स जानी चाहिए अंदर से मेजेंट्री से होते हुए, उनकी वो रुकावट हो जाती है, एंड देयरफॉर इट कैन लीड टू मिडगट इस्कीमिया। और उसकी वजह से बावल जो आते जो है वो डायलेट हो सकती हैं, और उसको कॉफी बीन साइन बोलते हैं। ठीक है। सो इनिशियली इस केस में दिस वाज एट समथिंग अराउंड 28 वीक्स, वाज बीइंग रेफर्ड फॉर अ डॉक्टर। We identified that this was a whirlpool sign, right? Now the baby weight was something around 1100 gram, right? So now the question is this, that probably how accurate are you in making the diagnosis first? Even though we identify that the whirlpool sign is there and then ischemia is not there, ischemia is there, बट कॉफी बीन साइन इज नॉट देयर। कॉफी बीन साइन होने का मतलब ये है कि जो आते होती हैं वो नॉन पेरिस्टाल्टिक और फूल जाती हैं वो, तो वो उसमें वो इस्कीमिया के साइन ज्यादा आ गए। राइट। तो वो इरिवर्सिबल गट की डैमेज उसमें हो गई है। राइट। सो विच वाज नॉट देयर। so whirlpool sign was there but the coffee bean sign was not there. Right. But so meaning thereby that at 28 weeks we are identifying some issues with the gut that probably, if not resolved, might lead to some gut ischemia, and therefore the whole of the gut might need to be removed, because वो उसमें वो सब नेक्रोसिस हो जाएगी उसमें। राइट। ये सब बातें टू टेल टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, द गायनेकोलॉजिस्ट वुड डू अ सिजेरियन and will take the baby out. When the baby is out preterm, we are talking about preterm at 28 weeks, right? So 1100-1200 gram वाले baby को, so this becomes a medical emergency. So pediatric surgeon, he has to be on board and concording the same finding that probably the baby would need immediate, after the baby is born, immediate surgery would be required, so as to detort and to deloop that उस आंकड़े को खोलने की जरूरत पड़ेगी, and therefore so as to re-establish the blood flow or to resolve that strangulation of the gut. Right. So there are a lot of revolving pieces that need to be put together. So a fetal medicine specialist making a diagnosis at preterm at 1100-1200, and then talking to a gynecologist and convincing her, even though with the parents are wrong, to do a preterm cesarean to take the baby out, you know. So meaning thereby that we are talking about a preterm cesarean and a prematurity to the fetus, then a pediatric surgeon who should be willing enough to really operate upon to a very premature and a preterm baby, so as to salvage the gut, right? But the same advice was given to the pediatric surgeon that even though we do this phonetic exercise and all those stuff, by the time we'll do all these exercise, right? So eventually you made a diagnosis, you will reach to a conclusion, you will reach to a sort of an OT and do a cesarean, and then the baby would be operated upon. By the time the ischemia would all got set in. So if, come what may, if you can wait for some 2 more days or 3 more days, that coffee bean sign which is absent at the moment might turn out to be there. राइट। सो मीनिंग देयर बाय कि वो बाउल डायलिटेशन और जो नेक्रोसिस है वो हो जाएगा। राइट।
But astonishingly, what happened is this, that these loops got sort of an delooped on its own, even though the lesion was there, even though they had agreed that whatever it is there, let us do and give it a chance to the baby, right? Okay. So if this is a midgut necrosis, and so we are left with nothing, right? But God forbid, will let us just wait for a day or two, and then these lesions, they become less and less, gradually and gradually and gradually. But then the lesion was there, but the lesion persisted, and the lesion was there, and meaning thereby that the baby delivered at 36 weeks, and a good healthy baby was there. And in the second case also, very recently, I have come across with the absolutely the same conditions, in which we have told them that this could be a malrotation vis-a-vis midgut volvulus, right? But our past experiences was this, that probably they might release, they might get de-looped on their own, so it is worth. So meaning thereby that at the moment we really cannot do anything about it, except of making them in a close surveillance and for a watchful expectancy, and therefore, so this is what it is all about. So meaning thereby that this midgut volvulus diagnosis is very very tricky, and difficult to take an action upon, right? So that is what it is. So this is making a diagnosis doesn't leads to any help, leads to a lot of anxiety, and therefore lot of surveillances and all those stuff, right? Thank you very much for your question.